So comparison between different forms of public enterprises. The point of difference is, first is formation. The departmental undertaking is formed by the ministry as the department of government. In case of public corporation, it is formed by passing a special act in the parliament or state legislature. In case of government company, it is formed by getting registered under the Companies Act 2013. Now the legal status. Departmental undertaking has no separate legal entity status. That is, the departmental undertaking will not be able to purchase or sell property in its own name. Okay, or it cannot sign any contract in the own name. Now in case of public corporation, yes, it is a separate legal entity, and government company is also a separate legal entity. मतलब public corporation हो या government company हो, वो लोग अपने name से contract sign कर सकते हैं and they can sell and purchase property in their own name. Then finance. Departmental undertaking is totally financed by the government in the budget allocations. तो budgetary allocation से ही उनका financing होता है departmental undertaking का. In case of public corporation, it gets the funds from government but can borrow independently also. तो गवर्नमेंट से भी उनको फंड्स मिलते हैं पर वो इंडिपेंडेंटली भी बोरो कर सकते हैं. दैट इज दे कैन लॉन्च इश्यूज ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स इन द मार्केट आल्सो. देन गवर्नमेंट कंपनीज सेपरेट फाइनेंसिंग. गवर्नमेंट प्रोवाइड्स फंड्स बाय टेकिंग मेजर शेयर होल्डिंग, कैन बोरो एंड प्राइवेट पार्टिसिपेशन इज आल्सो पॉसिबल. तो गवर्नमेंट कंपनी के लिए तो फाइनेंसिंग सेपरेट होगा, उनका गवर्नमेंट भी फंड्स प्रोवाइड कर देती है बट उनके मेजर शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट का होगा उसमें. दैट इज 51% ऑफ द कैपिटल विल बी होल्ड बाय द गवर्नमेंट, हेल्ड बाय द गवर्नमेंट. दे कैन बोरो एंड प्राइवेट पार्टिसिपेशन इज ऑल्सो पॉसिबल इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी. देन मैनेजमेंट एंड कंट्रोल. द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स आर मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स फ्रॉम द कंसर्न्ड इंडस्ट्री. तो जिस इंडस्ट्री के अंडर आ रहा है, जिस मिनिस्ट्री के अंडर ये डिपार्टमेंट आ रहा है, वही के ऑफिशियल्स जो है उसको मैनेज एंड कंट्रोल करेंगे. देन इन केस ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन, दे आर मैनेज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट पार्लियामेंट्री कंट्रोल. तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन दे आर अपॉइंटेड बाय द पार्लियामेंट और गवर्नमेंट. In case of government companies, they are managed by the board of directors who are nominated by government, but private individuals can also be the directors. तो गवर्नमेंट कंपनी में गवर्नमेंट के भी लोग होंगे डायरेक्टर्स की तरह और प्राइवेट भी पर्सन्स होंगे. देन स्टाफ. गवर्नमेंट सर्वेंट्स एंड सिविल सर्विस कोड इज एप्लीकेबल. द स्टाफ ऑफ द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, दे आर कॉल्ड एज गवर्नमेंट सर्वेंट्स एंड सिविल सर्विस कोड इज एप्लीकेबल टू देम. Then in case of public corporations, they are not called as government servants and separate contract of service is there for such public corporate employees. Then under the government companies, the employees are not called as government servants. There is a separate service contract in case of government company employees also. Then autonomy. There is no autonomy work. There is no autonomy in case of departmental undertakings. They work under strict control of the government only. In case of public corporations, the administrative autonomy as government does not interfere in the day-to-day working. Administrative autonomy है उनके पास, but government does not interfere in the day-to-day working. So थोड़ा बहुत administrative autonomy है, ऐसा कह सकते हैं public corporations में. उन day-to-day routine में government will not interfere. Then in case of government company, there is some freedom from the government interference. ऐसा कह सकते हैं कि थोड़ा freedom है government से, but actually they are having 51% stake and we have seen the demerits कि government interference होता है. So autonomy यहाँ पे it is in question actually. Then ownership. The departmental undertakings are wholly owned by government. Full ownership is of government. Public corporations be fully owned by government. And in case of government company, 51% of the shares are held by the government at least. उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं पर कम से कम 51% होंगे ही होंगे. Then public accountability. The departmental undertakings, public accountability is highest as they work under the direct control of the ministry. Then public corporations also are accountable to the parliament and public.
देन गवर्नमेंट कंपनीज आर अकाउंटेबल टू द मिनिस्ट्रीज कंसर्न, तो अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे है सब में. देन फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन, departmental undertakings do not enjoy the flexibility of operations, or if it is there, it is very little, or you can say not at all. Then in case of public corporations there is considerable flexibility in the operations, and in case of government companies again there is moderate flexibility, medium flexibility है, क्योंकि government stake उसमें है 51% या उससे ज़्यादा, तो flexibility again is in question, but it is there to some extent you can say. Then suitability, departmental undertaking form of organization is suitable for the industry like defense or post and telecom or broadcasting etc. Then public corporation type of organization is suitable for industrial and commercial enterprises of national priority, जैसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया वगैरह है वो, या ONGC है वो. Then industrial and commercial enterprises requiring participation of domestic and foreign private capital. These particular industries which or where you can say industrial and commercial enterprises, उनको domestic as well as foreign private capital की जरूरत है, ऐसी industries आएंगी गवर्नमेंट कंपनी के अंडर. Now let us understand the difference between the private sector and public sector. First is formation. The formation of private sector enterprises involves a long process. उसमें रजिस्ट्रेशन वगैरह बहुत सारा होता होगा, लाइसेंस वगैरह अप्रूव होने ज़रूरी है, तो प्रोसीजर्स होंगे, डॉक्यूमेंटेशन बहुत सारा होता है. इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग एंड अ लॉन्ग प्रोसेस. in case of public sector they can be formed in short time just by government decision. तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज कैसे फॉर्म हो जाती है कि बस डिसीजन लेना है गवर्नमेंट ने और वो हो जाता है, जैसे एक्ट बना दी उसके लिए तो वो एस्टेब्लिशमेंट हो गया. Then objective, the private sector enterprises work with main objective of earning profit, but the public sector enterprises work with the main motive of providing service to the public. तो yes, private sector में maximization of profit is their objective and public sector में providing service to public is their main motive. Management of private sector enterprises are these enterprises are managed and controlled by the board of directors who are professionals and experts. But in case of public sectors, these enterprises are managed and controlled by the board of directors who generally are representative of government. तो प्राइवेट सेक्टर में तो खुद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे जो प्रोफेशनल और एक्सपर्ट होंगे, मैनेज करेंगे बिजनेस को, बट पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स ही होंगे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयर्स में होंगे, एंड हेंस you can say it is controlled by the government only. Then capital. In the private sector, maximum capital is contributed by owners and investors, that is private owners and investors. But in public sector you can say the capital is contributed by the government. Then freedom of operation. There is more freedom of operation in private sector companies and there is less freedom of operation in the public sector enterprises due to political interference. Then accountability. The private sector enterprises are not directly accountable to general public, but the public sector enterprises are accountable to general public as their performance is discussed in the parliament. Obviously, प्राइवेट सेक्टर के ऑपरेशन पे कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, वो कुछ भी करे तो उनका खुद का लॉस या खुद की जिम्मेदारी होगी, लायबिलिटी होगी. बट पब्लिक सेक्टर का कैसे चल रहा है डे टू डे ऑपरेशन, रूटीन वर्किंग, उसके बारे में डिस्कशन होगा पार्लियामेंट में. सो public interest should be protected and hence you can say they are accountable. Public sector enterprises are accountable to the government and public in general. Then employees. The private sector enterprises recruit and select their own employees and they have their own rules and regulations regarding their remuneration. तो प्राइवेट सेक्टर में वो खुद रूल्स बनाएंगे एम्प्लॉयज को किस तरह सिलेक्ट करना है, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कितना पेमेंट देना है एम्प्लॉयज को, क्या रूल्स होंगे, वो सब कुछ डिसाइड करेंगे प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस. बट इन केस ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस दे आर जनरली सिविल सर्वेंट्स एंड पब्लिक सेक्टर फॉलो गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस रिगार्डिंग द रेम्यूनरेशन. तो जो भी उनका पे स्केल होगा, रूल्स होंगे, पब्लिक हॉलीडेज होंगे, सब कुछ होगा तो वो अकॉर्डिंग टू द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस ही होगा. Then performance evaluation. The performance of private sector enterprises is judged on the basis of economic gains only, whereas the performance of public sector enterprises is not only judged by economic gains but also many other non-economic issues. For example, service to the people or how is the working, transparency of working, day-to-day routine,
उनके काम में कितनी ट्रांसपेरेंसी है, कितना सर्विस दिया है उन्होंने लोगों को, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्टअप किया हुआ है, कितना पब्लिक इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किया है, कितने फ्रॉड्स डिटेक्ट किए या फ्रॉड्स प्रिवेंट किए हैं. So all these come under the public sector enterprises performance. So this is regarding the difference.